Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your economics teacher. This video lecture is for class 12th subject economics. Dear students, the topic which we are going to discuss today is supply of money. Dear students, what do we mean by supply of money? Dear students, in order to understand the concept, I have already given you the brief introduction about money in the previous lecture. So in order to understand this concept, the supply of money, let us recapitulate few statements from the previous lecture. That is, what do we mean by money? Dear students, money may be regarded as something which is generally used as a means of payment and accepted for settlement of debts. यानी कि मोनी हम किस चीज़ को, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही ये समझाया है कि मोनी का इवॉल्यूशन यानी मोनी का इर्तिका कब हुआ, कैसे हुआ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो मोनी की इवॉल्यूशन जो हुई क्यों, उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, we can say that for what purpose, or in layman's language we can say that we usually use money for the means of payment or for the settlement of debts. यानी कि हम पैसे का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, या तो हम पेमेंट के लिए, यानी कि कोई चीज़ हम जब खरीदते हैं किसी से, हम उसको पे करते हैं, मोनी, उसका कीमत अदा करते हैं, यानी मोनी देते हैं उसको. तो उस वक्त मोनी जो हो गया वो हो गया दैट मोनी, we use money as a means of payment. And also when we are in debts, यानी जब हम किसी के कर्जदार होंगे तो हम वो कर्जा कैसे चुकाते हैं, मोनी से चुकाते हैं. That's why we say that money is used as a means of payment and accepted for the settlement of debts. Dear student, the term supply of money. Yes, dear students, as far as the term the supply of money is concerned, this means that the total stock of money held by public in spendable form. The term public here refers to the individuals and the business firms in the economy, excluding the central government, the central bank and commercial banks. Thus, dear students, the cash balances held by the central government, the central bank and the commercial banks do not form money supply because they are not in actual circulation. यानी कि supply of money जो हो गया ना, actually supply of money हो गया supply, the money held by the public, the money which is in circulation. यानी कि जो आवाम के पास पैसा है, जो लोगों के पास पैसा है, जो इस्तेमाल होता है, यानी कि एक इंसान के पास बाद दूसरे इंसान के पास चला जाता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह इसकी सर्कुलेशन होती है, एक के बाद दूसरे के पास जाता है ये मोनी. तो that's why we say that the supply of money is known as the currency held by the public, the money held by the public which is in circulation. However, the money held by the commercial banks, the central bank, mostly the currency held by the central bank is not in actual circulation, so we doesn't include it in the supply of money. Dear students, money supply, as far as the concept of money supply is concerned, money supply is a stock as well as flow concept. Now you can ask कि ये flow concept कैसे है और stock concept कैसे है.
Dear students, when money supply is viewed at a point of time, it is stock. And when this money supply is viewed over a period of time, it's flow. Yes, dear students. For example, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ ये फ्लो और स्टॉक में क्या फर्क है. देखिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये कहेंगे इस वक्त अगर 10 बजे, अगर हम ये कहेंगे शाम के 10 बजे, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ए के पास कितना पैसा होगा शाम के वक्त, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम. इफ अगर हम इसी पर्सन ए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँगा पर्सन ए की एग्जाम्पल लूँगा मैं, पर्सन ए के पास इस वक्त कितना पैसा हो गया, वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ इस वक्त इसके पास कितना पैसा है. तो जब मोनी इस तरह मेजर किया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल किस वक्त इसके पास कितना पैसा एट ए पर्टिकुलर टाइम, देन दिस इज स्टॉक. व्हेन इट इज viewed over a period of time, it is flow. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा पर्सन ए के पास अगर इस वक्त 20 रुपया है, तो शाम के वक्त इसके पास जो रुपया होगा वो हो गया फ्लो कंसेप्ट. ये हो सकता है कि शाम के वक्त इसके पास 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 100 भी, 200 भी, क्योंकि जो इसके पास सुबह जो ये 20 रुपये थे, अगर ये इसको ट्रांजैक्ट करेगा तो ये इससे और कुछ कमा सकता है, मगर ये भी पॉसिबिलिटी है ये घाटा भी खा सकता है. सो दिस हिज मनी मेक्स continuous circulation in the economy. So over a period of time, when we view money over a period of time, it's a flow concept. So dear students, money supply at a particular moment of time is stock of money held by the public at a moment of time. It refers to the total currency notes, यानी जो हम ये कागजी रुपया देखते हैं, कागजी जो which is made up of paper. Money supply, it refers to the total currency notes, coins and demand deposits with the banks held by the public. Over a period of time, money supply becomes a flow concept. मैंने अभी आपको बताया. It may be spent several times during a period of time. The average number of times a unit of money passing from one hand to another hand during a given period is called velocity of circulation of money. यानी कि money, अगर मेरे पास इस वक्त 10 रुपया है, अगर मैं शाम के 10 बजे देखूंगा मेरे पास कितना रुपया होगा, कि जितनी तेजी से मेरा ये पैसा ट्रांजैक्शन करेगा, यानी कि अगर मैंने इस चीज से कोई चीज खरीदी, अगर अब इस चीज को मैं 10 बजे मैंने इसको खरीदा, सुबह की 10 बजे, अब 10:20 पर इस चीज को मैंने भेजा, फिर मैंने नई चीज लाई, फिर भेजा, फिर जितना तेजी से यानी कि रफ्तार से मैं इसकी ट्रांजैक्शन करूंगा उसको कहते हैं वेलोसिटी, रफ्तार. That's why we say that thus the flow of money supply over a period of time can be known by multiplying a given stock of money held by the public by the velocity of circulation of money. Yes, dear student, this was the brief introduction about the supply of money. So in the next lecture we will discuss it furthermore. Now there are other concepts as money held by the public, money held by the banks. So we'll discuss that in another lecture. So तब तक के लिए शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.